वेलकम टू एके पाठशाला पिला माने आज भिडियो रे आमे आलोचना करबा तुमर दशम श्रेणी इंग्राजी बहिर जो पोएमटे रही द फ्लावर स्कूल संपूर्ण क्वेश्चन आंसर आमे आलोचना करबा। तो जो माने वीडियो देखुच शेष जाए देख सांग साथी शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर रखि दियो। चलो पे देखिए कौन सब क्वेश्चन अच्छी। ये आसगला तुम पे क्वेश्चन ये कहुई रीड द पोएम साइलेंटली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलो ये सब प्रश्नर उत्तर बा क्वेश्चन आंसर आम गोटी गोटी कर आलोचना करवा। एक रु प्रथम पर्यायर 1 रु 24 जाए तुम प्रश्न देछि तापरे आमे नेक्स्ट प्रश्न को जीवा बा क्वेश्चन को जीवा। तो पहले फास्ट क्वेश्चन तुम अच्छी व्हाट इज द पोएम अबाउट। ये जो कविताटी कहा उपरे आम आंसर लिखा द पोएम इज अबाउट द फ्लावर्स बीइंग द ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। दिस पोएम इज ए vivid description of a building flowers and their growth in spring। एतिक लिखा क्वेश्चन 1 आम आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे कौन देखा सेकंड क्वेश्चन व्हाट रंबल्स इन द स्के। तो आम आंसर लिखा द स्टॉर्म क्लाउड्स रंबल्स इन द स्के। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 अच्छी व्हाट कम्स मार्चिंग ओवर द हेल्थ। तो आंसर लिखा द मोस्ट ईस्ट विंड कम्स मार्चिंग ओवर द हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी व्हिच वर्ड टेल्स दैट द ईस्ट विंड इज नॉट ड्राई। तो क्यों शब्दटी कौन जनाए जे द ईस्ट विंड इज नॉट ड्राई। तो आंसर कौन लिखा आंसर लिखा मॉइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर अच्छी 5 हाउ डज द मोस्ट ईस्ट विंड कम। आंसर लिखा द मोस्ट ईस्ट विंड कम्स बाय मार्चिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 अच्छी हाउ डू द crowds of flowers come out। आंसर लिखा द crowds of flowers come out all of sudden। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे 7 where do the flowers dance and how। आंसर कौन लिखा द फ्लावर्स डांस upon the grass in wild glee। नेक्स्ट 8 अच्छी which season is described in the poem। तो आंसर लिखा द spring season has been described in the poem। क्वेश्चन नंबर 9 कौन अच्छी ना where are the flowers all the year round। तो आंसर लिखा द फ्लावर्स आर प्रेजेंट अंडरग्राउंड इन देयर स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 अच्छी हु आर द फ्लावर्स कंपेयर्ड टू। तो आंसर लिखा द फ्लावर्स आर कंपेयर्ड विथ लिटिल स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा 11 हाउ डू दे डू देयर लेसन्स एंड व्हाई। तो आंसर लिखा द फ्लावर्स लर्न देयर लेसन विथ द dots short it is because they lead a disciplined life। next question 12 अच्छी who does their master refers to। आंसर लिखा their master refers to the teacher of the little flowers। next question अच्छे हम पाखे their master is strict or lenient। आंसर लिखा कही which line in the poem tells us so। तो आंसर लिखा their master is strict the line master makes them stand in a comma tells us so। next question देखा आम 14 when are they made to stand in a corner। आंसर लिखा when the flowers come out to play before it is time they are made to stand in a corner। next अच्छी when do the flowers have their holidays। आंसर लिखा the flowers have their holidays when the rains come। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला जे व्हाट चेंजेस टेक प्लेस इन नेचर व्हेन द रेन कम्स। तो आंसर लिखा व्हेन द रेन कम द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज क्लास टुगेदर द लीव्स रस्टल इन द wind and there are thunderstorms the colorful little flowers also come out to play। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी हाउ डू द फ्लावर चिल्ड्रेन एंजॉय देयर हॉलीडेज। आंसर लिखा द कलरफुल लिटिल फ्लावर्स कम आउट टू प्ले इन addresses to pink yellow and white। next 18 अच्छी who is the speaker sharing his thoughts with। आंसर लिखा the speaker is sharing his thoughts with his beloved mother। next question अच्छी where is the home
of the flower children. Answer लिखा the home of the flower children is in the sky. Next question, why are they eager to go to the sky? Answer लिखा they are so eager to go to the sky because they want to meet their mother who lives there. Next question हम पाखरे अछि, what does the speaker guess? तो आंसर लिखा the speaker guesses that the flower children have their mother in the sky. Next question हम पाखरे अछि 22, why are the flower children raising their arms? Answer लिखा the flower children are raising their arms towards the sky because they want to embrace their mother. Next question अछि, why are they in a hurry? Answer लिखा they are tired of their school life and now they are very eager to meet their mother, so they are in a hurry. 24, which line tells that the speaker also longs for his mother? Answer लिखा the line they have their mother as I have my own tells such that the speaker also longs for his mother. तो पहले तुम क्वेश्चन नंबर 1 to 24 जाए जहाँ सब प्रश्न बा क्वेश्चन सब थिला आमे आलोचना कले. नेक्स्ट तापर से आसीगला लेट्स अप्रिशिएट द पोएम. एठी मध्ये किछि क्वेश्चन अछि पाखापाखि एठी 7टी क्वेश्चन अछि आमे आलोचना करिया. तापर आ कोन क्वेश्चन अछि आमे देखिबा. फर्स्ट क्वेश्चन अछि 1, why do you think the flowers dance upon the grass in wild glee? तो आमे आंसर कोन लिखिबा ना. आमे आंसर लिखिबा the storm clouds build up in the sky and the moist east wind blows bringing the fast source of rain. The flowers have been compared to little school going children and the rainy season happens to be the season of holidays from them, so they dance upon the grass in the wild glee. नेक्स्ट तुम तापरे प्रश्नटे थिला जे डू यू थिंक द स्पीकर फील्स दैट हॉलीडेज आर फनियर देन स्कूल डेज? आंसर लिखा yes, the speaker feels that holidays are funnier than school days. It is because the when school children who leave boarding school come back to their home and meet their family members, they also meet their beloved mother. Next question थिला जे why does the speaker think that the flowers go to school underground? Answer लिखा the speaker thinks that the flowers go to school underground because their beautiful eruption above ground is similar to children being let out of a school into playgrounds and rainstorms are similar to school holidays. Next कौन क्वेश्चन अच्छे देखिया. तो पहले आम कही रखुच्छी जदि वीडियो भल लगुच सांग साथी निहाती वीडियो शेयर कर चैनल को निहाती सब्सक्राइब करी रख. क्वेश्चन 4 अच्छी हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब द स्टॉर्म? आंसर लिखिया द स्पीकर डिस्क्राइब्स द स्टॉर्म एज being the mother of flowers. When the stormy winds begin to blow and the showers begin to rain down, crowds of flowers come out to dance in the grass. The storm makes the tree branches clash against another with the rustling of the leaves and is accompanied by thunderstorms. Next question 5 अछि do you think that the speaker's description about the flowers and their school has any reality in the real life? The answer लिखिबा the little of the poem is almost paradoxical in that flowers do not actually attend school, but the flowers underground life can be compared to the life of humans living in mortal bodies, and like the flowers bursting into bloom above ground, so the human soul eventually departs the body to its true home. Question number 6 अच्छी which elements of nature celebrate holidays with the flower children and how? Answer लिखा the branches, the leaves and the thunder clouds celebrate the holidays with the flower children by clashing together in the forest, by rustling and by clapping their giant hands respectively. Next question अच्छी identify the lines and phases in the poem which indicate that the flower children have a strict system of schooling. Answer लिखिबा they do their lessons with doors shut, and if they want to come out to play before it is time, their master makes them stand in a corner. These lines tell us that they have a strict system of schooling.
तो पे जो 7टी क्वेश्चन थिला क्वेश्चन 1 to 7 जाए समस्त प्रश्नर सठिक सठिक उत्तर आम आलोचना कले तापर ये कही The poet presents a lively description of nature during the monsoon showers in June. The objects of nature seem to behave like human beings. Such a device in poetry is known as personification. Personification means that a thing, an idea, or an animal is given human qualities and described as a living thing. Because pick out as many such examples as you can from the poem one is done for you. गोटा कर दिया जाए आम आउ किसी करवा जमी कही स्ट्रॉम क्लाउड्स रोम्बलिंग इन द स्के एमती आउ कौन हम आम लिखा तो आम आउ लिखिपर जे जून शोर्स कम डाउन द मोस्ट इट विंड कम्स मार्चिंग crowds of flowers come out and dance upon the grass in the wildly branches clash together in the forest the leaves rustle in the wind the thunder clouds clap their giant hands the flower children rush out in dresses of pink and white इन तुम्हें उत्तर लिखिदेव नेक्स्ट प्ले तापर कही जे poets use word pictures to bring out a comparison between persons ideas or objects with a similar quality or appearance कही what are the things below compared to in the poem you just read one is done for you अच्छा कही द bamboos bagpipes सेमती आउ सब अच्छी आम तो करवा the bamboos bagpipes the flowers of children the underground the flower school the rain of living animals pink yellow and white colorful dresses the sky living place like the earth the stars flowers mothers flowers mothers तापर कौन क्वेश्चन देछि देखिबा तापर एठी कहिछि द थीम of a poem is the main idea of the poem. The theme may not always be stated but can be hinted at indirectly. Which of the following ideas support the theme of the flower school? Take your choice. अच्छा हमें से कही जे which of following ideas ये जो सब देइछि अदर क्योंटा सपोर्ट करे द थीम ऑफ द फ्लावर स्कूल अच्छा कही टेक योर चॉइस आम आम पसंद बाछिबा कौन हम गोटे हम एप्रिसिएशन ऑफ नेचर हम आटा कौन हम से जो पे कही जे कही कौन ना आइडिया सपोर्ट द थीम ऑफ द फ्लावर स्कूल अच्छा ये जो फ्लावर स्कूल को जो सपोर्ट कर जोटा आम से ठीक दबा टेक योर चॉइस एप्रिसिएशन ऑफ नेचर हम आउ कौन हम ना तुमर प्रेज ऑफ गॉड हम आउटे कौन हम ना लॉन्गिंग फॉर द मदर यहाँ हम तो पे ये तीन तुम्हें कर लिखि तापर लास्ट क्वेश्चन तुम अच्छी द पोएट्स लॉन्गिंग फॉर हिज डिसीडेड मदर किड्स दैट्स इन द रीडर्स माइंड पिटी पैनिक पाथोस प्राइड तो करेक्ट आंसर पाथोस